So hello guys, welcome to our day 7 of ACCFR batch. Today our agenda is to complete three topics, which is IS 8, 41 and 2. So let's start with IS 8. Um, Yes. this is this all three topics comes in chapter number 8, other standards. In exam study text, it's chapter number 8, name other standard. Okay, so let's start with IS 8, changes in accounting policies and estimates. If there is any change in accounting policies and estimate, how do we account for that? That's what we are going to learn in this. What is policies and estimate? Anything, any idea? Policies are like a type of rule, or maybe we can call ethic that we follow throughout the year the company is going, and because of which it shows the loyalty and honesty Mm-hmm. in front of his customers and investors. So, yeah, And estimates? estimates are the estimated result that we anticipate for the future, like profit or maybe sales value increasing and all. Okay, so you are explaining me the term estimate mean and policy mean. But here we are going to learn what are changes in accounting policies and changes in accounting estimate. Accounting estimates, not general estimate, just which means used to estimate few things, profits, etc. Not that. Okay. Okay. What are accounting policies? हमने पढ़ा है in IAS 16 we in every standard like policy. What are policies means? Policies means company policies की if अगर कोई asset purchase किया, for example asset purchase किया तो हम उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? कौन से रिवैल्यूएशन मॉडल कौन से मॉडल पे रिकॉर्ड करेंगे? रिवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल, करेक्ट? Hmm. तो दिस इज नोन एज पॉलिसी, कि ये कंपनी की पॉलिसी है कि इस चीज को ऐसे रिकॉर्ड करना है, करेक्ट? Yes. But what are estimates? Estimates are, I mean, for example, company uses SLM method for depreciation, or WDV, written down Hmm. value method for Hmm. estimates. So the company how they want to depreciate particular asset, it's a kind of estimate. Company used to estimate कि हाँ this could be the useful life as per our estimate कि ये useful life है, and on the basis of that we are going to depreciate. But what क्या कहते हैं उसको, uh, what types of depreciation method are we going to? These are estimates. This is model. Okay. Okay. Common generic है ना estimate, क्या हम यूजफुल लाइफ estimate कर रहे हैं कि at today's date ये estimate है कि इसकी लाइफ होगी 5 years, next year it could be 3 years, it could be 8 years. It's an estimate based on our uses. For example, on day one we thought that this asset is going to last for 5 years. Okay. On Hmm. year after year one we thought that no, we are not using this asset for which we have determined to use it, up to the extent we are determined to use it, but we'll use it slowly, and now the useful life is for 8 years, not 5 years. Hmm. बेस्ड पहले तो डिसाइड किया कि हम इतना इतना यूज करेंगे तो 5 years डिटरमाइन कर लिया, बट लग रहा है नेक्स्ट ईयर कि नहीं, हम इसको कम, थोड़ा कम यूज करेंगे तो उसके सब यूजफुल लाइफ भी बढ़ जाएगी. Right. Same as provision में we just learned yesterday that it's an estimate. On day one we are thinking that yeah, this could be a payable amount, this could be a liability that could come up in future. In year two, in year three, after year two, year three, we are determining that what could be a liability. I mean, change in. We are remeasuring the liability, right? Hmm. Because the possibility of payable amount can be changed. It's an estimate. Even the expected value. Just a second. Huh? Give me a minute. Yeah.
या सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ, सो हम थे प्रोविजन पे। Yeah. आई मीन टू से दैट हर साल वी आर चेंजिंग आवर एस्टिमेट टू डिटरमाइन द पेबल अमाउंट, आई मीन फॉर टू डिटरमाइन द लायबिलिटी। करेक्ट। एस्टिमेट्स। इवन एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड इज, वैल्यू मेथड क्या है? हमने परसेंटेज कैसे डिटरमाइन किया, प्रोबेबिलिटी कैसे डिटरमाइन की? इट्स एन एस्टिमेट ना, कि अगर 1000 प्रोडक्ट सेल किए तो इट्स एन एस्टिमेट कि आउट ऑफ 1000 100 विल बी डिफेक्ट्स। तो उसकी वजह से क्लेम्स आ सकते हैं इन फ्यूचर डिफेक्टिव प्रोडक्ट के लिए। 50% Hmm. चांस है कि कोई डिफेक्ट नहीं होगा। तो दैट वे वी कैलकुलेटेड, ऑन द बेस ऑफ दैट वी कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, एंड बिकॉज ऑन द बेस ऑफ प्रोबेबिलिटी वी डिटरमाइन द लायबिलिटी, लायबल अमाउंट। Hmm. So it's, this is all an estimate. So estimates of changes in policy and estimates of change होते हैं, how do you account for that? That's what we are gonna learn. Right. What are accounting policies? Specific principles, bases, convention, rules and practices applied by an entity. Generic policies definition. रूल्स क्या है, कंपनी की मॉडल्स, कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है, कंपनी का मॉडल क्या है, हाउ डू वी रिकॉर्ड दिस एसेट, कौन से मॉडल पे रिकॉर्ड करना है। करेक्ट। Hmm. इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट्स ऑल, इट्स अ सिंपल डेफिनेशन, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। Hmm. Selection and application of accounting policy. Accounting policy determined by how? Applying a specific IFRS. Correct. अगर IFRS 16 है, based on IFRS 16, we have two models allowed by IFRS 16, IS 16. Which, what are two models? Fair value model, cost model, revaluation model. Correct. Based on the IFRS IS guidance, we determine our policies. कि अच्छा, this is the allowed item. Two models are there we have. This is our assets. It's our estimate. It's our policy. How do we record this asset? On which model? Correct. Hmm. Guidance given by standard. Asset is there. Anything is there. Company policy. How do we record that? Correct. In the absence of IFRS, अगर कोई transaction ऐसा हो गया, for example, क्रिप्टो करेंसी का एज सच कोई स्टैंडर्ड नहीं है क्रिप्टो ट्रेडिंग का, Hmm. बिकॉज ऑफ द मल्टीपल रीजंस विच विल लर्न इन एसबीआर। बट दिस एन एग्जांपल कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है और उसका कोई आईएफआरएस स्टैंडर्ड ही नहीं है, तो हाउ डू वी डू दैट? फर्स्ट, रेफर टू आईएफआरएस डीलिंग विद सिमिलर। ऐसा कोई आईएफआरएस देखो जो सिमिलर चीज को डील कर रहा हो, Okay. सिमिलर चीज को। फॉर एग्जाम्पल, क्रिप्टो असेट्स आर काइंड ऑफ थिंग दैट वी कैनॉट टच और फील। करेक्ट। Hmm. और टच, नॉट टच और इंटेंजिबल्स किस में आता है? 38, जिसको Yeah. टच और फील नहीं करते। कहीं ना कहीं, ऑल्दो क्रिप्टो का स्पेसिफिक आईएफआरएस नहीं है, बट कहीं ना कहीं जो कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टैंडर्ड की, वो IS 38 में आती है कुछ Yeah. कुछ। तो ऐसे भी देख सकते हैं कि अच्छा, इस स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड इस चीज को कैसे गाइड कर रहा है। तो थोड़ा बहुत एस्टिमेट लेके, पॉलिसी लेके वी कैन चेंज कि हाँ, इस तरीके से हम कर सकते हैं। आई मीन अगर कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं है तो। करेक्ट। तो Right. फर्स्ट, रेफर टू IFRS इज डीलिंग विद सिमिलर और रिलेटेड इश्यूज, एंड सेकंड, टू द फ्रेमवर्क। Consider pronouncement of other setters or industry practices consistent with the above. अगर ठीक चल रहा है सब कुछ, तो फिर कंसिस्टेंट वही फॉलो करो। ठीक है। एंड जस्ट वांट टू से कि ये जो चैप्टर है, इसमें कुछ ऐसा कोई क्वेश्चंस नहीं है कि कोई प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है। इट्स जस्ट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू Clearly. Hmm. Right. कि अगर कोई पॉलिसी चेंज, क्योंकि हम, क्या हो रहा है, हमने ऐसा पॉलिसी पढ़ ली ना, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं कि अगर पॉलिसी और एस्टिमेट में चेंज हुआ ऊपर नीचे, तो कैसे इसको बस, स्टैंडर्ड इज सेइंग हाउ डू वी रिकॉर्ड, कैसे कब क्या करना है, दैट्स व्हाट वी आर गोना लर्न हियर। और कैसे क्या करना है वो तो स्टैंडर्ड बता ही रहा है, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। अगर
IAS 37 देखे, प्रोविजन एस्टिमेट्स का। अगर कुछ एस्टिमेट चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल टुडे इज द लायबिलिटी $10 million, नेक्स्ट ईयर इज $12 million, तो स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, 2 million का और लॉस बुक करो, डेबिट लॉस, क्रेडिट लायबिलिटी, क्रेडिट प्रोविजन। राइट। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टिवली चेंज कर रहे हैं उसको, प्रोस्पेक्टिवली मतलब नेक्स्ट ईयर से। और दूसरी चीज होती है रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब जब से ये फॉर एग्जांपल टुडे वी चेंज, और ये पॉलिसीज हम लास्ट 4 ईयर से यूज करते हुए आ रहे थे, आज चेंज किया, तो रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब पिछले 4 साल का भी चेंज करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे का। एंड प्रोस्पेक्टिवली मतलब आगे का। ओके। हम्म। Changes in policies always account as retrospectively, and changes in estimates are account for prospectively, आगे से। ये तो इसमें और स्टैंडर्ड इज सेइंग, वरना हम प्रोविजन पढ़ रहे थे अभी भी हमको पता था कि अगर नेक्स्ट ईयर से चेंज हो रहा है एस्टिमेट्स, तो हम प्रोस्पेक्टिवली आगे से ही चेंज करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम फॉर एग्जांपल 20x1 में $12 million था, 20x2 में $14 million हो गया, तो ऐसा नहीं कि हम नेक्स्ट 20x1 की भी लाइबिलिटी $14 million करेंगे, नहीं, हम 20x2 की लाइबिलिटी $14 million करेंगे। करेक्ट। राइट। इसका मतलब प्रोस्पेक्टिवली चेंज कर रहे हैं। तो वो तो स्टैंडर्ड ने ऑलरेडी बता दिया, बट जस्ट वी आर लर्निंग हियर कि क्या पर्टिकुलर आईएस स्टेट का स्टैंडर्ड है, तो व्हाट दिस स्टैंडर्ड इज आल्सो सेइंग। तो दोनों चीज वैसे भी मैच ही कर रही है, तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दैट। हम्म। ठीक है। अप्लाइंग चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। चेंजेस, एप्लीकेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड और इंटरप्रिटेशन। कोई स्टैंडर्ड को अप्लाई कर रहे हैं, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन है। हम्म। तो ठीक है, जो स्टैंडर्ड जैसे बोल रहे हैं अप्लाई स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन प्रोविजन, जो प्रोविजन कह रहा है उसके हिसाब से चलो। करेक्ट। अगर हम राइट। वॉलेंटरीली चेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड इज सेइंग कि दो मॉडल है आई 16 में, दो मॉडल है, फेयर रिवैल्यूएशन मॉडल और कॉस्ट मॉडल। अगर हम हम्म। रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं, तो यूज कंसिस्टेंटली रिवैल्यूएशन मॉडल सेम यूज करें। यू नो कि अगर हमने एक क्लास के एसेट को रिवैल्यूएशन किया, तो सारे क्लास ऑफ एसेट्स हु आर अंडर IAS 16 हैज टू बी रिवैल्यूड, यस। हैज टू बी अप्लाइड द सेम मॉडल विच इज रिवैल्यूएशन मॉडल विच वी आर अप्लाइंग। करेक्ट। राइट। अगर वॉलेंटरीली चेंज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी आर थिंकिंग नहीं यार, रिवैल्यूएशन मॉडल इज नॉट गिविंग अस अ ट्रू फेयर एंड व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वी आर चेंजिंग our मॉडल टू कॉस्ट मॉडल। ओके। ठीक है। तो अप्लाई चेंज रेट्रोस्पेक्टिवली, दैट व्हाट वी लर्न रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब अगर फॉर एग्जांपल वी आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर एसेट फॉर लास्ट 4 years, तो हम्म। हम लास्ट 4 years को कॉस्ट मॉडल पे शो करेंगे। But करेक्ट। what if we are using that last 4 year model in revaluation model? हाँ, तो कॉस्ट मॉडल पे शिफ्ट होगा ना, वी चेंज आवर मॉडल। Okay. तो हम रेट्रोस्पेक्टिवली करेंगे, फॉर एग्जांपल 20x1 में कॉस्ट मॉडल रिवैल्यूएशन मॉडल था 20x5, हम्म। मैं कॉस्ट मॉडल कर लिया, फ्रॉम वी शिफ्टेड फ्रॉम रिवैल्यूएशन टू कॉस्ट। तो हम Okay. लास्ट 4 years का उसको कॉस्ट पे ही दिखाएंगे। Okay. और जितना भी फॉर एग्जांपल उस 4 साल में जितना भी रिवैल्यूएशन गेन हुआ होगा ना, विल रिवर्स दैट। करेक्ट। How will reverse that? फॉर एग्जांपल ऑन December x1 में रिवैल्यूएशन गेन हुआ ₹100, $100। ओके। ठीक है। हमने उस टाइम पे एंट्री क्या बुक करी होगी, डेबिट असेट, क्योंकि असेट की वैल्यू बढ़ी, वॉल बी क्रेडिटेड, रिवैल्यूएशन सरप्लस, इट्स आर इनकम। करेक्ट। तो वो एंट्री को रिवर्स कर देंगे, डेबिट रिवैल्यूएशन रिजर्व कर देंगे, क्रेडिट असेट, हो गया सेट ऑफ। इतना स्पेसिफिक सडन चेंज होता नहीं है, बिकॉज सी, ऐसा चेंज करना इट्स अ बिग थिंग फॉर अ कंपनी,
और एक असेट नहीं होता 100 रुपी, 1000 मिलियंस ऑफ डॉलर का गेन होता है, मिलियन ऑफ डॉलर का लॉस होता है। तो अगर सडनली कोई चेंज कर रही है कंपनी, तो बहुत बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई, बहुत डिस्कशन होता है सबसे पहले तो, कि अगर हम इतना बड़ा चेंज करेंगे, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का डिफरेंस आएगा, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का डिफरेंस आएगा, लॉसेस बुक होंगे। क्यों? क्योंकि पहले हमने इनकम बुक किया था, अब सेम ईयर में लॉसेस भी बुक हो जाएंगे। करेक्ट ना? क्योंकि रिवर्स कर रहे हैं उसको। हम्म। तो इट्स मिस्टेक, यूजर्स को ना बहुत डिफिकल्टीज होती है सब चीज समझने में। तो इट्स इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि कंपनीज आर चेंजिंग और डे वन की हम ये करेंगे यूज, और नेक्स्ट 4-5 ईयर्स के बाद कह रहे हैं कि हम ये यूज करेंगे। तो इट्स अ बिग थिंग। तो जब भी असेट हम पर्टिकुलर कोई लाते हैं, तो तभी हमें स्ट्रेटेजिकली डिसाइड करना है कि व्हाट मॉडल वी आर गोइंग टू यूज, एंड वी आर इंश्योरिंग दैट वी आर गोइंग टू कंसिस्टेंटली यूज दैट मॉडल till the end of his useful life। राइट। करेक्ट? इट्स नॉट स्मॉल थिंग, इतना बड़ा लॉस होता है, यूजर्स इन्वेस्टर को लॉस होता है। और जब हम कंपनी ने डेट डेट भी बहुत लिया होता है, डेट टू इक्विटी रेशियो। तो कंपनी ने डेट और इक्विटी मेंटेन किया होता है बिजनेस में, कि इतना इतना तो डेट और इक्विटी रेशियो मेंटेन करना जरूरी है। और डेट भी लिया होता है ना, तो इट्स जब बैंक लोन भी देती है ना, तो इट्स अ कोवेनेंट रूल, टर्म्स एंड कंडीशन गिवन बाय बैंक, दोज आर नोन एज कोवेनेंट्स, कि आपका ना पर्टिकुलर प्रॉफिट कंसिस्टेंट होना चाहिए, कि हमेशा 5% से इंक्रीज होना ही चाहिए। ये कोवेनेंट है। अगर नहीं हुआ तो लोन रिपेबल हो जाएगा। इट्स अ पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लोन। तो राइट। जस्ट थिंक फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कि टुडे आई एम सेइंग कि आई एम चेंजिंग द मॉडल। ओके? तो उसकी वजह से सबसे पहले चीज तो मेरे यूजर्स को इम्पैक्ट आएगा, सबसे पहले तो मेरे को खुद को इम्पैक्ट आएगा, मेरा लॉस होगा, लॉस बुक करना पड़ेगा। हम्म। हम्म। मेरा प्रॉफिट में इम्पैक्ट आएगा, यूजर्स को इम्पैक्ट आएगा। अगर राइट। कुछ लोन्स ले रखे हैं और कोवेनेंट उस पे फिक्स्ड है, तो वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। हम्म। ये सब तो दिख रही है चीजें, कुछ कुछ चीजें नहीं भी दिख रही होती हैं। करेक्ट? तो वो राइट। भी चीज इम्पैक्ट होती है। सो ऑल्दो वी आर लर्निंग, बट इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग फॉर फ्रॉम अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत, अगर चेंज भी करिए तो बहुत डिटेल कंपनी को उसका लॉजिक बताना पड़ेगा। कंपनी हैज टू पुट अ बिग नोट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कि व्हाई वी आर यूजिंग दिस मॉडल एंड व्हाट्स आर थॉट ऑफ चेंजिंग दैट, क्या लॉजिक था। हम्म। करेक्ट? एंड व्हाट आर वी थिंकिंग, कि अगर ये यूज किया तो, सी कोई भी चीज चेंज होती है ना, तो entity or a business has to prove कि the change is going to increase the fairness of the financial statement। राइट। ठीक है? तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि एक तो लॉजिक क्या है, और ये चेंज से कितना फेयरनेस और इम्प्रूव हो जाएगा। कि अगर हम ये रिवैल्यूएशन यूज कर रहे थे, तो क्या फेयरनेस नहीं आ रहा था, क्या चीज नहीं शो हो रही थी फ्रॉम हम्म। फ्रॉम द फाइनेंशियल पोजीशन। और हम कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या चीज अब नहीं, क्या चीज और ज्यादा शो होगी, क्या ज्यादा फेयरनेस आएगा, क्या ट्रू एंड फेयर व्यू दिखेगा बिजनेस का एक्चुअल का, करेक्ट राइट। परफॉर्मेंस का। तो ये सारी चीजें होती हैं विच वी हैव टू डिटरमाइन बिफोर चेंजिंग पॉलिसीज एंड एस्टिमेट्स। ठीक है? ओके। गॉट इट। these are the disclosures that we have to make. Disclosure: an additional statement of financial position at as beginning of the comparative period, disclose करना पड़ेगा। If change is on account of initial application of standard interpretation, disclose change in accordance with transactional provision for the current year presented year, the amount of adjustment related to periods before those presented, क्या एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमें। ठीक है ना? एक तो हम्म। लॉजिक एक्सप्लेन करेंगे, इसकी वजह राइट। से हम 4 साल में क्या एडजस्टमेंट करेंगे वो भी बताना पड़ेगा। ओके। शो करना पड़ेगा ना, यूजर्स को कैसे पता लगेगा कि व्हाट आर वी हम्म। डूइंग। राइट। करेक्ट? if retrospective application is required but impractical, the circumstance and a description। करेक्ट? क्या सर्कमस्टेंस था, उसका डिस्क्रिप्शन क्या था, सब कुछ बताना पड़ेगा।
हम्म। एंड नीड नॉट रिपीट दिस डिस्क्लोजर इन सब्सिक्वेंट पीरियड, क्योंकि जब नेक्स्ट पीरियड से हम वही चीज यूज करेंगे, अब तो सेम डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। पर जिस ईयर में चेंज कर रहे हैं, और अगर उस चेंज के कारण रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आ रहा है उस क्लास ऑफ असेट्स और कुछ कोई भी चीज में, सो वी हैव टू पुट आर सर्कमस्टेंसेस, क्या सर्कमस्टेंस था, डिस्क्रिप्शन क्या था, क्या लॉजिक था, व्हाट इज आवर मोटो, क्या चेंज होगा उससे नेक्स्ट और प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या चेंजेस आ सकते हैं, एवरीथिंग वी हैव टू शो। और राइट। ये भी चीज शो करनी पड़ेगी थी। दिस इज नोन एज डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर, अफेक्टेड और बेसिक। क्या होता है, आई मेक यू अंडरस्टैंड, ऑल्दो वी आर गोइंग टू लर्न दिस इन आवर अर्निंग पर शेयर चैप्टर, बट जस्ट a gist. ओके। What is earning per share? Earnings per share. What is earning? Earning means profit. या। What are per share means? For example, हमारा प्रॉफिट इज 1000, कंपनी में शेयर थे 100, हम्म। तो अर्निंग्स प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो 10, 10 इज आर अर्निंग्स पर शेयर, मतलब एक शेयर पे आई एम अर्निंग $10। राइट। करेक्ट। अब नेक्स्ट ईयर से क्या हो रहा है, अगर मेरा रिवैल्यूएशन रिजर्व मेरे को रिवर्स करना है, या तो कुछ लॉस बुक करना है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन एस्टीमेट, मेरा प्रॉफिट हो गया 800, सेम नंबर ऑफ शेयर तो वही रहेंगे, हम्म। मेरा अर्निंग्स पर शेयर गिर गया। किसको इम्पैक्ट आया, बिजनेस को एक तो, और या। जिसने शेयर होल्ड कर रखे हैं उसको शेयर की वैल्यू कम हम्म। हो गई, अर्निंग्स कम हो गई। हम्म। ये चीज शो करनी पड़ेगी। व्हाट स्टेटमेंट इज सेइंग, द अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ ईच फाइनेंशियल आइटम अफेक्टेड फॉर बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। ओके, करेक्ट। राइट। चेंजेस इन पॉलिसीज एंड डिस्क्लोजर्स, अगर चेंज वॉलेंट्री है तो हैज एन इफेक्ट ऑन करंट पीरियड और एनी प्रायर पीरियड, क्या करंट पीरियड में प्रायर पीरियड में इफेक्ट है, ये सब डिटरमाइन करना पड़ेगा। वुड हैव सच एन इफेक्ट एक्सेप्ट दैट इज impractical टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट, क्या फ्यूचर पीरियड में भी इफेक्ट हो सकता है। देन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज व्हाट, व्हाई द चेंज प्रोवाइड reliable and more relevant information, that's what I make you understand, right? कि ये चेंज से क्या रिलायबल और मोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आ जाएगी, करेक्ट, ये पॉलिसी चेंज राइट। करने की वजह से। हम्म। करंट पीरियड प्रायर पीरियड में क्या क्या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट प्रायर पीरियड करंट पीरियड में क्या क्या करना पड़ेगा, सेम अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है तो सर्कमस्टेंसेस और डिस्क्रिप्शन बताना। ठीक है। राइट। चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स include the effect of change, provision got changed, useful life got changed from 5 years to 10 years, 10 years to 5 years, provision got changed from 12 to 14, 14 to 10, anything, हम्म। correct. Change in accounting estimate prospectively in net profit and loss, prospectively मतलब next year. ओके। The period of change, if the change affect the period only,
अगर सिर्फ वही पीरियड अफेक्ट करे तो ठीक है, बट अगर फ्यूचर पे भी इम्पैक्ट करेगा तो वी हैव टू अकाउंट फॉर फ्यूचर पीरियड एज वेल। द पीरियड और the period of change and future period of change means if today we are estimating, so it's for us it's a period of change, correct? Future periods next year is हम्म changing the fact both, अगर दोनों चीज इम्पैक्ट कर रहा है तो दोनों। If difficult to distinguish between estimates and policy, treat the change as accounting estimate। अगर कोई पॉलिसी है उसको इट्स डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कि ये एस्टिमेट है कि ये चेंज इन पॉलिसी है, हम्म तो always treat it as changes in accounting estimate। this is what the standard is saying। ओके ठीक है। या ऐसे मोस्टली चीजें तो पता लग ही जाती है, बट कोई एक्सेप्शनल केस होता है जिसमें पता नहीं लगता है बिजनेस को ही कि ये हम्म एस्टिमेट की पॉलिसी है चेंज। तो इन दैट केस एक्सेप्शन है कि उसको फिर एस्टिमेट ही ट्रीट करो, डोंट ट्रीट एज पॉलिसी। अंडरस्टैंड क्योंकि एस्टिमेट क्यों ट्रीट करना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि ये चेंज से आगे के पीरियड के फ्यूचर पीरियड इंपैक्ट होंगे। बट पॉलिसीज चेंज करने में क्या रिस्क है कि हमें प्रायर पीरियड भी चेंज करना पड़ेगा, तो उससे जो इम्पैक्ट होंगे और ज्यादा इम्पैक्ट होगा। एस्टिमेट तो चेंज होते रहेंगे फ्रीक्वेंटली, क्योंकि एस्टिमेट फ्यूचर में ही चेंज है, तो करंट और प्रायर पीरियड इंपैक्ट नहीं हो रहा है, फ्यूचर में होते रहेंगे तो दैट इज फाइन। बट जब हम्म चीज पुरानी चीज भी इंपैक्ट होती है ना, तो उसमें फिर रेपुटेशन हैम्पर होता है। तो या इसलिए इतना फ्रीक्वेंटली पॉलिसीज चेंज नहीं करते बिजनेस, बट एस्टिमेट दे यूजुअली चेंजेस, क्योंकि फ्यूचर पीरियड्स में इंपैक्ट होगा, प्रोस्पेक्टिवली चेंज कर रहे हैं। करेक्ट। यस So you might have seen questions in IAS 16 and IAS various in I think I studied as well कि company changes their estimate of useful life and depreciation step depreciation क्या कहते हैं उसको, depreciation model हम्म frequently, क्योंकि उनको पता है प्रायर पे इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। तो फ्यूचर पीरियड दैट इज फाइन, बट ऑल्दो इतना फ्रीक्वेंटली वो भी चेंज नहीं होता है, उसका भी रीजनिंग देना पड़ता है डिस्क्लोजर में कि व्हाई आर वी चेंजिंग अ यूजफुल लाइफ, व्हाई आर वी चेंजिंग अ प्रोविजन एस्टिमेट, एवरीथिंग। राइट बट प्रायर पीरियड चेंज करने द बिग रेपुटेशन लॉस, अगर कुछ हुआ तो वो बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, रिस्की ऑप्शन हो सकता है, इसलिए इतना फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है। एस्टिमेट्स चेंजेस फ्रीक्वेंटली, बट दोनों का रीजनिंग देना जरूरी है डिस्क्लोजर। ओके। अंडरस्टैंड इज इट अ चेंज इन पॉलिसी और एस्टिमेट क्रेडिट सॉल्व। इज मिस्टर ए जो कह रहा है इज इट राइट और रॉन्ग। जस्ट अ सेकंड I think it's an change in estimate as per Yeah, Mr. it's A. an estimate, but the suggestion given by Mr. A. Is he right or wrong? Um, I think is right Why? because the PQR group company estimated wrong in 2013, right? Hmm. It was Hmm. a fault in
their vehicles because of something else. Mm-hmm. But they realized that it was not because of something else, it was because they used the faulty parts. So that's why uh, it's a change in estimate. And what accounting standard comes this case comes under? What we are studying, IAS to IAS 8. No, but ठीक है, change in estimate है, but इसका standard भी तो है that we learned yesterday. अगर more claims है तो क्या हो गया? We have to book liability ना provision, Yeah, right. correct? IAS 37. Mm-hmm. Yes, you are correct. ठीक है. अगर कुछ Uh, error हो गया, I'm sorry, can you just give a second? yeah, Yes. yeah. अगर कुछ error occur हुआ, for example, गलत we have did one question जिसमें entity has wrongly booked the lease liability as operating cost yesterday only, Hmm. और error हमें पता चला next year. What Hmm. we did for that? We deducted the amount that we paid that year. Yeah, we deducted, but um, where we made that adjust In PNL? opening return earning, if I'm not wrong, because for that Yeah, yeah, yeah. for It was next year for it was profit, right? correct. हाँ. Hmm. तो जैसे ही ओपनिंग रिटर्न अर्निंग चेंज किया ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर का लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस भी चेंज हो जाएगा Hmm. बस. तो उसको हमने क्या किया? वी मेड इन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, करेक्ट. Okay. रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किया हमने, Yeah. लास्ट ईयर का चेंज किया ना, बस वही है. अगर कुछ एरर और ओमिशन मिस्टेक में पता चलता है, व्हाट वी से, वी डू अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, और हम ओपनिंग बैलेंसेस चेंज कर देंगे रिटर्न अर्निंग के. करेक्ट. अगर वो एरर लास्ट 3 साल से चलता हुआ है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हर साल के ओपनिंग बैलेंसेस चेंज कर जाएंगे. फॉर एग्जांपल करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस चेंज किया, इसका मतलब लास्ट ईयर चेंज हो गया ऑटोमेटिकली. Hmm. लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस चेंज किया, लास्ट टू लास्ट ईयर हो गया. लास्ट टू Yeah. लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस चेंज किया, लास्ट टू लास्ट टू लास्ट टू लास्ट क्या हो गया. अंडरस्टूड. जैसे तीन Yes. साल का चेंज हो गया ऑटोमेटिकली. Right. करेक्शन फॉर प्रायर पीरियड एरर, करेक्ट मटेरियल प्रायर पीरियड एरर रेट्रोस्पेक्टिवली. अगर मटेरियल है तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दो. Hmm. Restating the comparative amount for prior period presented in which the error occurred, और या तो प्रीवियस ईयर के कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स जो होंगे उसमें चेंज करो, या तो इट्स बेटर टू चेंज फ्रॉम द ओपनिंग बैलेंस. Okay. How does it say that if the error is material or not? उसमें वी हैव टू यूज आवर जजमेंट.
For example, a business total assets value is only uh, $10,000. Okay, total assets की वैल्यू $10,000 आ रही है, तो इट्स एन एस्टिमेट कि चलो फाइव इसका 5% ना, इसके 5% की आइटम जितनी भी होगी, तो 500 से ऊपर जितना भी ट्रांजैक्शन मटेरियल कोई भी होगा, फॉर अस फॉर बीइंग एन एंटिटी, इट्स मटेरियल फॉर अस, बड़ी चीज है, सिग्निफिकेंट। Right. करेक्ट। But नॉट ऑन द बेस ऑफ असेट्स, ये तो एक एग्जांपल है, प्रॉफिट के बेस पे भी हो सकता है, रेवेन्यू के बेस पे भी हो सकता है कि अच्छा इतना रेवेन्यू, hmm. अच्छा इतना परसेंटेज ऑफ सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट, और इससे अबव गया तो दैट विल बी सिग्निफिकेंट फॉर अस मटेरियल। Hmm. Quick quiz. We are done with the standard. Solve this. I think quiz one answer is A, changes in useful life from 10 years to 7 years. Because it's an estimate, right? बाकी सब फीफो से एवरेज मेथड, लीफो से एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, चेंजेस इन वैल्यूएशन मॉडल, विक्स एसेट का कैसे कॉस्ट टू इवैल्यूएशन, इट्स ऑल All पॉलिसीज। are policies. Yeah. क्विज 2 Just एंड क्विज 3। um, if it's for voluntarily, then I I'm can sorry, but show I can show you if you want the notes voluntarily, then here. yeah. You want me to track this this snip No, no, no. I behind? got the Okay, answer. you got the answer. What is the answer? Uh, accounted for retrospectively. Perfect. But just a second. What can be the question if the answer was informed shareholders prior to taking the decision? It was not supposed to be voluntary, right? नहीं, क्वेश्चन वॉलंटरीली का मतलब क्या होता है? कंपनी themselves trying to change the model, that is voluntary, खुद से कर रहे हैं। Hmm. Hmm. And what are you trying to say? No, I'm saying that if अगर first option हम्म। right होता, हम्म। तो what might can be like question. फर्स्ट ऑप्शन राइट होता ही नहीं कभी, क्योंकि अगर चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, इवन इफ वॉलंटरी, अगर स्टैंडर्ड भी कह रहा है, तो देयर वुड बी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट।
ओके। फर्स्ट आंसर कभी होता ही नहीं। ये स्टैंडर्ड में तीन ही चीज है: चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिव, एस्टिमेट प्रोस्पेक्टिवली, एरर्स रेट्रोस्पेक्टिवली। डन। गॉट इट। क्विज 3। व्हाट इज सैल्वेज वैल्यू? दे क्या कहते हैं उसको, सेलिंग वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप। ओके। If it's the changes material, then we will do the retrospectively change. Answer is A. So no, but if it's an, what is, it's an policy or a estimate, what the Uh, business is trying to do. If you're saying it's an retrospective, it means for you this is change in policy, right? That's what you're thinking. yes. Right. See, स्क्रैप वैल्यू कंपनी की पॉलिसी नहीं हो सकती कभी भी कि कंपनी की पॉलिसी स्क्रैप वैल्यू 1000 ही होगी, 2000 ही होगी। इट्स एन एस्टिमेट, हर साल चेंज हो सकती है वो चीज। करेक्ट। हाउ कैन यू से Right. कि स्क्रैप वैल्यू इज माय पॉलिसी? करेक्ट। स्क्रैप वैल्यू इज माय एस्टिमेट कि टुडे आई एम सेइंग कि मार्केट में इसकी स्क्रैप वैल्यू है 1000, नेक्स्ट ईयर कुछ भी हो सकती है, इट कैन बी जीरो एज वेल, कि अगर कुछ वैल्यू नहीं है मार्केट में, स्क्रैप वैल्यू जीरो। Hmm. सेम एज यूजफुल लाइफ। तो अगर एक्सपर्ट इज सेइंग कि योर स्क्रैप वैल्यू इज ड्रास्टिकली चेंज, इट मींस कि देयर इज, कंपनी हैज टू make changes in their estimates। करेक्ट। और अगर वो एस्टिमेट चेंज करेंगे तो क्या होगा? व्हाट कुड बी द आंसर? S. ट्राई टू डिग डाउन अ बिट कि क्या चेंज हो सकता है स्क्रैप वैल्यू की वजह से। डू यू नो द फॉर्मूला टू अकाउंट फॉर डेप्रिसिएशन? Depreciation. Yeah. Cost minus scrap value or करेक्ट residual करेक्ट। तो value स्क्रैप divided वैल्यू by में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो किसको इम्पैक्ट आ रहा है? cost को। कॉस्ट को तो आ ही रहा है, बट डेप्रिसिएशन हो रहा है ना इम्पैक्ट। हाँ हाँ हाँ, राइट। तो व्हाट इज द आंसर? B. No, one, just a second. This is not error. I think we should change the depreciation for current and future years. So C. यस, यू नो द आंसर बट स्टिल यू आर गेटिंग कंफ्यूज। दिस इज द राइट आंसर, बी कॉन्फिडेंट। अगर एस्टिमेट है, प्रोस्पेक्टिव, करेंटेड चेंज, फ्यूचर चेंज, एरर तो है ही नहीं। ऐसा तो क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है कि एक्सपर्ट्स इज सेइंग कि लास्ट ईयर भी कैलकुलेटेड योर डेप्रिसिएशन रॉन्ग, फिर आता कि रेट्रोस्पेक्टिव चेंज दो। Right. करेक्ट। Hmm. आंसर इज सी। ओके, सो या आई थिंक वी आर डन विद IS 8। what you want a 5 minutes break before starting new topic, or should I continue with IS 41? How long it will take to complete IS 41? It take 1 hour 45, 1 hour. Maybe I think we should continue. Okay. Biological assets, IS 41. we have all we have learned assets, different types, machinery, yoga,
लैंड हो गया, फर्नीचर्स हो गया, फिक्चर्स हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, माइनिंग एसेट्स, decommissioning, intangible assets, tangible, everything. Now, what are we going to learn? Biological assets. What, what is your idea when you heard hear a term biological assets? What do you understand? What assets could come up Sorry, in biological assets? Which assets? sir. The assets that we own, I don't know the exact meaning of biological assets. Biological assets means plant. If I do own a poultry farm or any nursery. So for me, it's an asset, right? Big Right. plants. If I own a poultry farm, then sheep, cows, buffalo, for me it's an asset, right? Hmm. Because those assets, those plants, being a nursery owner or a poultry farm owner, those are those will I'll get milk, fertilizer from them, which I'll sell them in the market. तो इसका मतलब क्या हुआ? एंड असेट का मतलब ये होता है इट विल गिव अस इकोनॉमिक बेनिफिट. अगर नॉर्मल बिजनेस, कमर्शियल बिजनेस है, इट्स नॉट अ पोल्ट्री और एनीथिंग, तो मशीनरी इज गिविंग अस, फॉर एग्जांपल क्लोथिंग इंडस्ट्री, we have a manufacturing machine is giving us the cloth is the inventory for us now, because that is going to be say in the market, correct? Right. So machinery is Hmm. going to account as IAS 16. The cloth which I'll produce is IAS 2 inventory, and the same I'm going to sell in the market to earn revenue. Same as poultry farm. Cows will give me milk, will give me fertilizer, correct? Hmm. From their animal excreta. I'll sell them in a market, correct? For me, that is inventory, and I'll earn revenue, correct? So this is the Right. business model. Same if I own a uh, nursery or any plant will, for example, mango tree. Okay, I have a huge farm of mango tree. I'll get mangoes from those trees. Those mango is now inventory for me, क्योंकि मैं उसको sell करूंगा, correct? Trees is Right. continuously giving me mangoes. Same as clothes. It's manufacturing clothes, manufacturing mangoes. I'll sell them those in a market. I'll earn revenue. ठीक है ना? So ultimately the assets are giving me economic benefit. So we Hmm. have to account for those as per IAS 41. Okay. Yeah. Biological assets, agriculture produce at the point of harvest. Government grants related to biological asset are measured at fair value. Uh, we have learned in government grants that we do get grant for any particular expense or to particular construction or to purchase a asset. Correct? Yes. तो अगर कुछ काव परचेस करने के लिए भी वी आर गेटिंग लोन ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, दैट विल अकाउंट एज गवर्नमेंट ग्रांट्स ना. सेम सेम लॉजिक, ठीक है? असेट के टाइप को भूल जाओ बट लॉजिक इज सेम, राइट? एवरीथिंग. Hmm. ठीक है. तो बस वही है. अगर कुछ ग्रांट मिला है तो उसको फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे, आज की जो उसकी करंट मार्केट वैल्यू है. करेक्ट. Okay. ओके. वी अंडरस्टूड टाइप्स ऑफ असेट्स कम अंडर दिस एंड ग्रांट एज वेल. ओके. विच असेट डू नॉट कम अंडर दिस? लैंड, वो तो पीपीई है ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड Hmm. इक्विपमेंट. इंटेंजिबल आज 38 में चला जाएगा. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्ट. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्ट इसका मतलब कि आफ्टर हार्वेस्ट मतलब, फॉर एग्जांपल, मैंगो ट्री, I harvested mangoes from the tree, so those mangoes is now not is my asset anymore, it's my inventory. Although inventories are asset only but not long term non current asset, Hmm. correct? Those Right.
are now my inventories, and I am going to sell those in a market. Correct? Anything a business sells, and that is the nature of this business. For example, nature of the business to sell clothes. So clothes is an inventory. Nature of business to sell mangoes. Mangoes in an inventory. Hmm. Correct? Hmm. So that will account as per IS2. Okay? Inventories. Now dig down a bit to the terminologies. Okay. What are biological assets? Definition. A living plant or animal, cattle, trees, poultry, plant for harvest, pigs, etc. Ships. Ships. If I give you an example, if I own ships, those are biological assets for me. I sell those. I sell those ships. What do you call feathers? I don't know the exact word, but feathers or wools to third party, and that third party will manufacture blanket for that from those his feathers. Okay, Hmm. so for us, what are ships? How will account for ships, and how will account for feathers? For ships, it's an asset for us. Will account as 41. Yes. Feathers, it's an inventory for us because the nature of us is to sell those feathers into the third party. Hmm. Correct. Now the third party's nature is to manufacture blankets from their feathers. Okay. Correct. Hmm. So for him, the blanket would be what? Inventory. Inventory. Yeah. And the feathers would be raw material for him. Correct. Raw Yes. material मिला Yes. उसको. Correct. Hmm. You are you able to imagine that how asset items are getting shift, asset class are getting shifted from asset to Right. inventories to raw material. Are you getting? Yeah. 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 उसके वजह से क्या हो रहा है? Our accounting model is getting changed और accounting change हो जाएगी. Hmm. You cannot say कि feather भी IAS 36 के हिसाब IAS 16 के हिसाब से will account, IAS 41 के हिसाब से will account. No, asset Okay. class ही change हो रहा है. ठीक है. So there Now, is all yeah. different accounting for raw material, for inventories, and for asset. See, raw material की accounting क्या होगी? Raw material is nothing. It's just a direct labor cost, material cost. Yeah. Yeah. करेक्ट It's ना? true. तो वो तो इन्वेंट्री के कॉस्ट में ऐड हो रही है. Hmm. ऑल द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल लेबर. इन्वेंट्री कैसे बन रही है? इन्वेंट्री आइदर वी परचेज, Hmm. या तो फॉर एग्जांपल सिंपल टेक्सटाइल मार्केट क्लोथिंग. ठीक है. Hmm. आई परचेज क्लोथ्स, डायरेक्ट फ्रेश क्लोथ्स, मैन्युफैक्चर्ड क्लोथ्स फ्रॉम समवन एल्स. आई सेल दोस इन अ मार्केट. So Right. those did clothes, for example, one t-shirt is costing me $500. ठीक है. Hmm. तो उसकी इन्वेंट्री क्या कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ परचेज, दैट इज $500. तो वैल्यूएशन क्या होगी? $500. मैं उसको बुक्स में किस पे दिखाऊंगा? मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री $500 पे. बट अगर मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आई यूज आई परचेज फेदर्स, टेक्सटाइल्स, व्हाट डू यू कॉल अदर मशीनरीज, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, आई नीड लेबर्स फॉर दैट, मटेरियल्स आ गया. ठीक है. Hmm. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के हर एक बैच जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसका पर यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल 10,000 टी शर्ट्स पर मैन्युफैक्चर करने का डेप्रिसिएशन इज कॉस्टिंग मी 10,000 डॉलर. तो Hmm. एक शर्ट का कॉस्टिंग इज वन डेप्रिसिएशन. करेक्ट. Right. सिमिलरली लेबर्स भी 10,000 ही है, मटेरियल भी 10,000 ही है. तो इसका मतलब इफ थ्री कॉस्ट आर गेटिंग एडेड टू कंस्ट्रक्ट वन इन्वेंट्री, इसका मतलब one t-shirt is costing me $3, $1 Hmm. for depreciation, $1 for electricity, $1 for material, $1 for labor, $4. Hmm. 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 करेक्ट. तो Right. मेरी कॉस्टिंग कितनी हुई? $4. करेक्ट ना? तो Yes. दो चीजें, या तो कंस्ट्रक्ट करो या तो डायरेक्ट मार्केट से उठाओ. दोनों Hmm. में, दोनों केस में
cost to the company is the cost of inventory. जैसा कुछ अलग अकाउंटिंग नहीं है. रॉ मटेरियल आ गया, इट्स दिमाग में आ जाना चाहिए, इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेंट्री. इन्वेंट्री कहीं ना कहीं Hmm. टेस्ट होगा. Hmm. ठीक है. Yeah. Agriculture produce, the harvested products, mangoes, milk, fertilizers of entities biological asset. Harvested product of what? Entities biological assets. जो biological assets थे उसके harvested products. Wool, sorry, we call them wool, not feathers. Milk, wool, wheat भी हो सकता है ना, अगर फार्मर है, फार्म से है तो wheat सेल कर रहा है. Hmm. जहां से द प्लांट विच आर प्रोड्यूसिंग wheat, that is IAS 41. Wheat is inventory. Correct. Right. 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 Agriculture activity क्या है? What is agriculture activity? Is the management by an enterprise or an entity of biological transformation of biological asset. Biological transformation मतलब conversion. For example, cow is giving birth to one more baby. This Hmm. is biological transformation. Correct. So Right. that baby is not an inventory anymore. It's the same. The baby is going to grow and will do the same thing as her parents were doing. Yeah. Correct. So this is known as biological transformation. Transformation. What the transformation come comprises of growth, degeneration, reproduction, production, and procreation. Got it. Correct. Yeah. With this diagram, you will understand crystal clear. Growth. This is growth. This is degeneration because it's got died. The biological asset got died. इसका मतलब डिकम्पोज हो गया. सेम Hmm. एज असेट सेल हो गया. सेम एज अगर मशीनरी होती फ्रॉम IAS पॉइंट ऑफ व्यू तो सेल हो गई, इसमें डेड हो गया, डिजनरेशन बोलते हैं. जस्ट अ चेंज इन टर्मिनोलॉजी. Yeah. Concept is everything same. Hmm. Degeneration means the asset is not anymore giving us the economic benefit. Okay. And degeneration can happen either with sale, या तो asset की sale हो जा रहा है तो it's no longer giving us economic benefit, या तो asset got died. If a cow got died, any living thing got died. Okay. Right. Production. Cow is giving us milk, cheese, butter, paneer. Okay. What is procreation? Understood. Increasing. Like. Reproduction. Yeah. Simple. Yeah. Hmm. Let me give you a question, hypothetical question. You have to answer. For example, my business nature is to sell different dog breed. I Hmm. do have dogs, male and female, both of each and every breeds. Uh, I have to reproduce, to create inventories in the market, sell those, correct? Sell those breeds. Right. Hmm. What would come under asset and what would come under inventory? For example, I do have Labrador breed of both female and male. Okay, Yeah. 5 puppies got reproduced, and I'll sell those Okay. five puppy in the market to earn money. So for me, who will accounted as 41 and who will be accounted as inventories as per IAS 2. IAS 2 will be the 5 puppies that you will sell. Correct. And the parents would be my And asset.
Yeah. But if I say you that out of those five puppies, because see, nobody can produce puppy for lifetime. Okay, there's Hmm. a life for that. If I say ki out of those five puppies, I'll grow two, which is male and female, and three I'll sell, and two I'll keep for me for my future reproduction. Okay. So two will be my asset, three will be inventory. Inventories. Right. It's all from the business point of view. How are I am thinking to use those? Hmm. Correct? Hmm. Perfect. Right. Biological assets. Sheep will give lambs. Lambs will give what? Wool, carcasses. Fruits, trees will give samplings. Fruit. Biological means sampling is small, the seeds or some kind of thing that will give us a new tree. Sampling. They will give fruit. It's about agriculture produce. Correct. Hmm. So this both and this IS2 and this will 41. Okay. Correct. No. Right. Same IS41. Once it's harvested, it's come under IS2. Okay. Just read it out for more conceptual clarification. Biological assets that are not used in agriculture activity will remain outside the scope of standard. जो agriculture activity के लिए use ही नहीं हो रहा है, those will go out of scope of standard. Right. Suppose PQR zoo has 50 animals. Animals in the zoo do not have active breeding activity. अगर agriculture activity क्या है? Management by entity या तो सेल कन्वर्जन हो रहा है, सेल हो रहा Hmm. है, सेम वापस रिप्रोड्यूस हो रहा है, सब कुछ पूरा प्रोसेस आई मीन टू से. Hmm. करेक्ट. Hmm. दैट इज एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी. अगर कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, दैट इज नॉट एन बायोलॉजिकल एसेट. अगर जू में कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, ना ब्रीडिंग हो रहा है, करेक्ट, ना कुछ सेल हो रहा है उनका रिप्रोडक्शन, करेक्ट, so those there is no agriculture activity we can say, and so it's outside the scope of the standard. Right. Correct. Yes. This is the recognition criteria, same as other assets definition. Just read it out and give me a minute, and I'll just come back. Yeah. Sure.
Yeah, you have read the Yeah. definition. How do we record? Yeah. Hmm. You agree with that? It's same as the other asset that we Yeah, yeah, recognize, like same. future economic benefits Future and economic benefit, past event, fair value model, cost model, same. hmm. Hmm. इसमें सिर्फ type of asset is getting changed. Everything is same. Yeah. The few more terminologies you have to learn. This degeneration, procreation, agriculture activity, biological transformation. This all this thing. Otherwise, there's nothing to worry about this standard. Hmm. Measurement. The measurement part won't be same as other standards. Okay. As per IAS 16, it allows two standards, but biological assets gives us only one standard, which is fair value less cost to sell. हमें सारे assets को at the reporting date, at the initial stage, fair value less cost to sell पे दिखाना है. fair value आज की market value कितनी है, अगर if we sell this in the market, क्या cost आएगी मेरे को बेचने की, तो net cost is my fair value, correct? उसमें मैं रिकॉर्ड Okay. करूंगा. Hmm. बट एक्सेप्शनल केस है कि अगर फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो रही है, an entity says that cost model will give us more fair and view fair presentation of financial statement, then entity can use cost model as well. Okay. When it's allowed alternative method, the alternative method is allowed if fair values cannot be determined because quoted market price are not available or alternative estimate of fair value are determined to be clearly unreliable. ठीक है. This alternative basis is only allowed on initial recognition. इनिशियल रिकॉग्निशन पे अलाउड है, अगर फेयर वैल्यू नहीं मिल रही है तो विल रिकॉर्ड फॉर कॉस्ट मॉडल. रिपोर्टिंग डेट पे हमेशा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा. दैट्स इट. Okay. ठीक है. Hmm. या देयर आर थ्री वेज टू डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू. एंड ये मत सोचना कि दिस फेयर वैल्यू, डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर वैल्यू ये सिर्फ इसी चैप्टर के लिए है. दिस इज जेनेरिक वन इन एवरी चैप्टर. अगर किसी की भी फेयर वैल्यू वी आर नॉट एबल टू डिटरमाइन, देयर आर स्टेप्स ऑफ डिटरमाइनिंग द फेयर वैल्यू. फर्स्ट, अगर उसकी कोटेड प्राइस है, लेवल वन मतलब इजीली मिल जाएगी, बहुत ट्रेडिंग हो रहा है, कोटेड प्राइस है, मिल जाएगा मार्केट वैल्यू, दैट इज Hmm. फाइन. अगर लेवल टू, मार्केट उस पर्टिकुलर असेट की मार्केट वैल्यू नहीं है बट सिमिलर असेट की मार्केट वैल्यू मिल रही है, तो वी कैन असेट कि हाँ इसकी भी इतनी होगी. ठीक है. Okay. लेवल थ्री, अगर सिमिलर असेट की भी मार्केट वैल्यू नहीं मिल रही, तो हाउ विल असेस, विल एस्टिमेट कि हम इस असेट से, सॉरी, इस असेट से नेक्स्ट 5 इयर्स में उसकी फ्यूचर कैश फ्लो कितना होगा. फ्यूचर कैश फ्लो मतलब हाउ, what economic benefit in next 5 years this asset will is going to give me. ठीक है. Hmm. हम उसकी कैश फ्लो निकालेंगे. आई एम सेइंग कि हर साल 1 लाख डॉलर 1 लाख डॉलर 1 लाख डॉलर नेक्स्ट 5 ईयर से देगा. इसका मतलब 5 साल तक इट विल गिव मी 5 लाख डॉलर. बट आज की तारीख में मुझे नेक्स्ट 5 ईयर में 5 लाख डॉलर मिलेंगे, तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा उस कैश फ्लो का. ठीक है ना. Right. तो नेक्स्ट 5 में 5 लाख होगा, तो आज की वैल्यू समवेयर अराउंड 3.5 to 4 होगी, समवेयर बिटवीन. Hmm. ठीक है. So that is going to be my fair value. Next year I'll rebound it, the fair value will change. Next year I'll again rebound it, the fair value will change. That's how discounting. Understood. ठीक है. What could come up in cash flow? कैश फ्लो में क्या आ सकता है? एनीथिंग. कैश इनफ्लो. कैश फ्लो में एक्सपेंसिव भी तो आ सकता है ना. नेक्स्ट 5 ईयर हम इनकम ही देख रहे हैं कैश फ्लो, तो कैश फ्लो क्या मतलब है? नेट कैश फ्लो. अगर आई एम एस्टिमेटिंग कि 1 लाख डॉलर इज माई कैश इन नेट कैश इनफ्लो, इसका मतलब समवेयर बिटवीन मेरा कैश इनफ्लो इज 150 बट आउटफ्लो 50 हो रहा है, तभी नेट वन लाख डॉलर आ रहा है. कुछ ऐसा ही होगा सिनेरियो. Hmm. करेक्ट. तो प्राइस ऑफ मैच्योर्ड क्रॉप इन अ मार्केट, कैश इनफ्लो कुड बी एनीथिंग. मतलब मैं इसका इन शॉर्ट की इकोनॉमिक बेनिफिट कितना होगा मेरा नेट कैश इनफ्लो टोटल, और उस इकोनॉमिक बेनिफिट को अर्न करने के लिए मेरा कॉस्ट कितना लगेगा. करेक्ट. Right. करेक्ट. तो इट्स सेम हो गया ना, वही हो गया ना, सेम चीज. कैश इनफ्लो इज माय फेयर वैल्यू, कैश आउटफ्लो इज कॉस्ट टू सेल, fair value less cost to sell is my net cash flow.
करेक्ट. सेम एज द स्टैंडर्ड इज सेइंग फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, कैसे रिकॉर्ड करना है. बस डिफरेंस ये है कि फेयर वैल्यू कैसे निकाली है, क्योंकि हमारे पास ना कोटेड प्राइस है ना सिमिलर असेट की मार्केट प्राइस है. तो वी आर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ असेट एज पर लेवल 3. Right. राइट. अंडरस्टूड. Hmm. व्हाट कुड कम अप इन कॉस्ट टू सेल, आई मीन कॉस्ट करने का सेल क्या होगा. जस्ट थिंक विदाउट सीइंग एग्जांपल, व्हाट कुड कम अप. कमीशन. अगर मुझे कुछ चीज बेचना है, मैं किसी ब्रोकर को बोल रहा हूँ बायर ढूंढो, तो ब्रोकर बीच में कमीशन लेगा ना बायर ढूंढने का. Yes. Correct. If I want to sell a property, I do not have network of buyers. I hire a broker for me. I tell broker, please broker find me a buyer. Broker will get me a buyer. The price of a property is $1 lakh. I have to pay 1% of the fair value of the property to broker as a commission. So for me, what is the fair value? Fair value is $1 lakh less commission which I paid to broker. So net, how much I'm getting from buyer? 99. Correct. Understood. Yeah. It could be anything. Fees, अगर कुछ, अगर डॉक्यूमेंटेशन रेगुलेटरी फीस है, कोई लीगल Hmm. फीस है, वो भी पे करनी है. तो दैट इज ऑल्सो माई कॉस्ट टू सेल ना, कि वो सेल करते टाइम पे मेरा कॉस्ट आ रही है, तो इट्स माई कॉस्ट टू सेल. बेचने का खर्चा. Hmm. बेचने का खर्चा मतलब क्या, कमीशन, टैक्सेस, फीस. करेक्ट. Maybe interest. या इंटरेस्ट भी आ सकता है. Hmm. बट हाउ इंटरेस्ट, इन व्हाट सिनेरियो यू आर टेकिंग इंटरेस्ट एज अ Like सेलिंग कॉस्ट. taking loan to sell something, maybe. टेकिंग लोन टू सेल. हु टेक्स लोन टू सेल. In general, interest expense for taking loan. नो इंटरेस्ट. इन दैट केस इंटरेस्ट एक्सपेंस वोंट कम अंडर दिस. क्योंकि अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने लोन लिया हुआ है, तो इसमें Hmm. बिजनेस का खर्चा ना, तो मैं उसको कॉस्ट टू सेल्स में क्यों दिखाऊंगा. Right. द बिल्डिंग इज एन एसेट फॉर मी. करेक्ट. Hmm. बोरिंग कॉस्ट आ जाएगा ना बीच में, IAS 23. Yeah. तो कॉस्ट टू सेल्स कैन बी दिस, टैक्सेस, फीस, कमीशन. ओके. Understood. एंड एनी चेंजेस इन द फेयर वैल्यू, वेर इट गोज, it won't go in revaluation surplus, it will be accounted in P&L, same as investment properties. Hmm. Changes in fair value won't go in revaluation surplus. IS 40, right? IAS 40, IAS 41, same. The Hmm. fair value is included in net P&L for the year in which it arises. Okay. Okay. Now solve this question. Although answer is also in this, but try to solve on your own. ABC purchased 200 cattle Hmm. at an auction. Auction में खरीदा $200, 2,100,000, 200 Hmm. cattle at June 2013. अब परचेस करने के टाइम पे ऑक्शनर फीस अमाउंटेड टू 1% ऑफ सेल्स प्राइस. कॉस्ट टू सेल, क्योंकि मुझे उसको मैंने परचेस किया, मैं दिखाऊंगा तो फेयर वैल्यू पे ना, तो फेयर वैल्यू क्या है उस टाइम पे, परचेस प्राइस इज फेयर वैल्यू. Right. करेक्ट. तो 200 का परचेस किया, 1% उस सेलिंग प्राइस पे मैंने क्या, ऑक्शनर फीस पे की. ठीक है, Hmm. तो 1% कितना होता है, 2000. Hmm. तो द फेयर वैल्यू इज व्हाट, 198. करेक्ट. Right. ऑक्शनर फीस. अगर आई एम सेइंग यू कैटल फेयर वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 2 lakh to 220,
इसका ओके, मतलब क्या हो गया कि 20, 220 पे भी मैं पे वन, करूंगा ऑप्शनल फीस 1%। या, करेक्ट। हाँ, तो एट दिस स्टेज मेरा कैरिंग अमाउंट कितना था? 198। हाँ, 198 was my recording value at the day I purchased, initial यस, purchase। रिपोर्टिंग डेट पे उसकी क्या वैल्यू हो गई? 220, 2 लाख नेट 20,000 नेट या, ना, नेट नेट ही देखना पड़ेगा। फेयर वैल्यू एज कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू एज कॉस्ट टू सेल। तो इसमें भी मैं ऑप्शनल फी पे करूंगा। राइट, तो कितना हो गया? 220 पे 220 का 1%, मतलब 22 इज माई ऑप्शनल फीस। So net how much? What, 200, 217. या, So net gain to P&L will be how much? 19,800. राइट, गॉट इट। ठीक है। Squeeze time, solve this. सी, Perfect. And what is the standard of harvested products? IAS 2 inventories. Correct, correct. Solve this second one as well. C, C. Okay. And in what cases I can record at B as well? this is not for this standard. IF, IAS 41, the B option. Exceptional cases when we are not suppose when we don't have market value or fair value. But only allowed at where? Initial stage, not at the reporting stage. Initial stage मतलब at the day of purchase. Mm-hmm. ठीक है। Got it. So yeah, we are done with 41 as well. We are just left with one more standard, which is IS2, and we'll start this after our break, which is lunch break. So it's 12:45. Let's meet at 1:15. Okay. Okay? Okay. Okay, bye. Bye.
Hello. Hello. Yeah. Hello. Yeah. Let's start Am I audible? with, yeah, you are very much audible. Let's start with the last topic, IS2, inventories. What are inventories? I think now you have a very brief idea about inventory. Hello. Yes. Yeah, I was asking you what is inventory. I think now you have a very much brief idea regarding that. So Sorry, can you repeat? I was saying you that what do you understand by inventory? I think the we have studied very much regarding inventories and it's Inventory the is something that we, yeah. So, inventory is something that we use to sell, and it's a product that we sell to gain profit. basically Inventory are the inventories stock and it could be that we have. anything. It is anything that is saleable firstly and what saleable basically the nature the entity stands for that product has been sold. For example, entity's business nature is to sell clothes, textile market. So clothes are inventory. Entity's nature is to sell phones. Then phones products are inventories for them. Entity's nature is to sell cars. Then cars are inventories. Okay. Am I audible? Right. Hello. Yeah, you were a little stuck in between, but now you're audible. Okay. So you got the basic meaning of inventories, right? Yeah. So how are we going to account for inventories? The first definition, inventories are valued at lower of cost and NRV. Okay. Lower of cost, if cost is 10 Okay. rupee and net realizable value is 11 rupee, will record inventory at cost which is 10 rupee. If the inventories cost is 10 rupee and net realizable value is 5 rupees, Hmm. then we have to bring the inventory to 5 rupees. Why? Because if this is the case, then if this is the case where market value is less than the cost, then this case shows that our inventory might be obsolete or outdated. Right. Correct? So that is why we are recording at lower of cost or NRV. If cost is 10, NRV is 11, then the valuation should be on cost, which is cool, good. And if the NRV is 5 and cost is 10, then we cannot show it at on cost, because if we are continuously recording at cost, then we are overstating our inventories, which is wrong. Hmm. And because of what could happen if you have idea regarding P&L changes and impact on profit. If my inventories are overstated, what do you think it could have impact on my profits? How overstatement of inventories can affect profit? Um, if inventories are overstated, it means that we disclose the stock that we have to sell,
it's more than what is available in our warehouse. So this says that we'll sell more. It means will our profit will increase, and which will wrongly show the profit in our accounts. Do you know how do we calculate cost of sales? You know, right? In P&L, first is revenue, then cost of sales and GP. Hmm. Revenue is, for example, 1,000, cost of sales is 100, GP is 900. Okay. Then operating cost, for example, 100 more than net, to then profit. Let's say there is no other cost in our book. So what is the profit then? 800. But how do we calculate this uh, POS? It's opening inventory. You have all studied all this in your management accounting and financial accounting in your F3, F2 and F3. Yeah. Opening inventory Plus plus purchases that we are purchase going to make minus closing. less closing inventory. Hmm. So just ratifying the formula won't give you marks in this in effort. उसमें तो रट्टा मार लिया कि ठीक है ऑपरेटिंग कॉस्ट परचेजेस और क्लोजिंग आ गया तो दिस इज आवर कॉस्ट ऑफ सेल बट व्हाट डज इट एक्चुअली मींस ओपनिंग मींस लास्ट ईयर क्लोजिंग ठीक है फॉर एग्जांपल ओपनिंग व्हाट डज इट मीन ओपनिंग इन्वेंटरी सेल जिसका मतलब फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर वी हैड 1000 प्रोडक्ट इन आवर इन्वेंटरी 900 गॉट सोल्ड इसका मतलब ओपनिंग में 100 बचा हुआ है एंड कॉस्ट ऑफ दैट 100 इज समवेयर फॉर लेट्स से 150 Hmm. okay we made additional purchases in year is 50 ठीक है so total how much we had in current year 200. 200 and closing I'm saying that I have 100 left more and cost of is 100 correct इसका मतलब क्या हुआ कि this is 100 is left in my books Hmm. okay तो नेट कितना शो हो रहा है नेट अभी भी 100 का ही इसका मतलब क्या हुआ कि 150 लास्ट ईयर थे 50 वी गॉट एडेड एंड इसका मतलब 200 था करंट ईयर में और 100 अभी भी बचा हुआ इसका मतलब 100 गॉट सोल्ड between Yeah. the year okay so that's why it called as cost to sale 100 इन्वेंट्री का कॉस्ट इज 1 रुपी ईच इसका मतलब 100 ईच तो 100 कॉस्ट हो गया Hmm. यही मतलब हुआ ना नेट का मतलब तो Hmm. करेक्ट ओके Yes. इफ आई से दैट लास्ट जो क्लोजिंग बैलेंस 100 बचा हुआ था उसका कॉस्ट वाज नॉट कॉस्ट वाज फॉर अस इज 1 रुपी बट इन मार्केट वैल्यू इट द कॉस्ट ऑफ ईच इज 0.5 50 0.5 Okay. okay and standard says that inventory should be recorded lower of cost or NRV okay तो अगर मैं कंटिन्यूसली इस पे शो करूं कॉस्ट पे तो कॉस्ट पे शो करूं तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आएगी 100 मगर मैं 1 रुपी पे शो करूं Hmm. बट अगर मेरी रियलाइजेबल वैल्यू एनआरवी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनआरवी कैलकुलेटिंग एनआरवी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल नेट रियलाइजेबल वैल्यू Right. करेक्ट नेट कितना रियलाइज होगा Yeah. ओके 100 इज कॉस्ट ऑफ 100 गुड्स इज 1 रुपी 1 रुपी Hmm. ईच इसका मतलब टोटल विल बी 100 Yeah. now cost of each product has reduced to 0.5 okay and standard says that हमें उसको उस पे दिखाना पड़ेगा लोअर इसका मतलब 0.5 पे वैल्यू होगा इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा इन्वेंट्री का कॉस्ट 0.5 इसका मतलब 50 हो गया Yes. ठीक है considering same revenue same operating cost
COS is how much? 250, करेक्ट? Yes. तो मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है? दिस रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट 750। Hmm. तो क्या फर्क पड़ा? अगर मैं 1 पे रिकॉर्ड कर रहा था, मेरा प्रॉफिट था 800। अगर मैं 0.5 पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरी इन्वेंट्री को, मेरा प्रॉफिट इज गोइंग टू रिड्यूस एट 750। Right. 50 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं 1 पे गलत रिकॉर्ड करूंगा, मेरा प्रॉफिट 50 से ज्यादा शो करेगा। वाई वाई बिकॉज 100 यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ऑलवेज इन नेगेटिव। हम माइनस करते हैं क्लोजिंग, तभी हमें पता चलता है कि नेट करंट ईयर में कितना सेल हुआ। करेक्ट? Hmm. तो 100 को अगर मैं 1 पे दिखाऊं, इसका मतलब मेरी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो रहा है। कॉस्ट ऑफ सेल्स Hmm. कम हो रहा है, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है। जैसे मेरा Right. क्लोजिंग मैंने 0.5 पे कैलकुलेट किया, मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स 50 से बढ़ गया, मेरा प्रॉफिट जैसे ही मेरा कॉस्ट बढ़ा, प्रॉफिट कम हो गया। Right. तो अगर मैं कंटिन्यूसली 1 पे शो करूं उसको बुक्स में, तो मेरा प्रॉफिट ओवरस्टेट हो रहा है। डोंट यू थिंक मेरा प्रॉफिट ओवरस्टेट हो रहा है? Yeah. करेक्ट? तो इट्स मिस रिप्रेजेंटेशन। Yes. ठीक है, ओके। तो इसके वजह से कैलकुलेटिंग लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट? टू शो Yeah. फेयर प्रॉफिट इन ऑफ आवर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। नाउ व्हाट डू वी ऐड इन अ कॉस्ट? देखो, इन्वेंट्री टू दो तरीके से परचेज कर सकते हैं। आइदर वी परचेज स्ट्रेट फॉरवर्ड फिनिश गुड, और आइदर वी मैन्युफैक्चर द फिनिश गुड। तो अगर वी परचेज, तो परचेज करेंगे तो क्या कॉस्ट होगी हमारी? परचेज प्राइस, जो भी टैक्सेस लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग कॉस्ट, इन शॉर्ट जो Hmm. भी चीज उसको यूज सेलेबल कंडीशन में लाने के तक कॉस्ट होगा, दैट ऑल विल एड इन आवर बुक कॉस्ट, सेम एज IAS 16। डिलीवरी कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टैक्सेस, एवरीथिंग। करेक्ट? Yes. अदर एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, लेस ट्रेड डिस्काउंट, अगर कोई डिस्काउंट मिला है तो विल रिड्यूस रिबेट्स एंड सब्सिडीज, अगर कोई उस पर सब्सिडीज मिली। ठीक है? अगर हम, इफ वी कंस्ट्रक्ट आर गुड, फॉर एग्जांपल वी मैन्युफैक्चर द फिनिश गुड, then we have to incur direct cost, direct labor cost, machinery cost, depreciation, electricity, सब कुछ हमें निकालना पड़ेगा। So what cost are we adding to our cost of inventory? First, cost which are specifically attributable to the unit of production. For example, 100 kilowatt electricity is being used to manufacture 100 clothes. ठीक Hmm. है? और 100 किलोवाट का चार्ज आ रहा है 100 रुपीज टू मैन्युफैक्चर 100 क्लोथ। इसका मतलब एक क्लोथ को बनाने में कितना इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आ रहा है? 1 रुपी। Yeah. यही वो कह रहा है, स्पेसिफिकली एट्रीब्यूटेबल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एग्जाम्पल, डायरेक्ट लेबर, direct expenses, electricity, depreciation, subcontracted cost, direct labor, anything, material cost। ठीक है? Okay. Production overhead must be based on normal level of activity। Production overhead, how do we calculate production overhead? You have studied this in management accounting। If to manufacture 100 t-shirts, my overhead, basically total indirect cost, is going to be 10,000। So per overhead cost कितना होगा? 100। That way you calculate, right? Hmm. तो वही कह रहा है, production overhead must be based on normal level of activity। Any other overhead is attributable to particular circumstance of a business to bring the product or services to present location and condition, that will also be added in the cost of conversion। Okay.
The following costs should be excluded and charged as expense as and when they are incurred. First, abnormal cost. You know, abnormal cost we exclude even Hmm. from revenue, cost incurred part, IAS 16 as well. Abnormal costs are ignored. Storage cost, administrative overhead that do not contribute to bringing the inventory to the present location. Admin stuff, करेक्ट. जो भी चीज इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन और सेलेबल कंडीशन तक लाने का जो भी कॉस्ट है दैट विल एड रेस्ट ऑल विल एक्सपेंस आउट. दिस इज द लॉजिक. Right. ठीक है. सेलिंग कॉस्ट अगेन दिस इज नॉट अ कॉस्ट टू एक्वायर, कॉस्ट टू ब्रिंग द इन्वेंट्री एट करंट लोकेशन एंड टू मेक द इन्वेंट्री एट सेलेबल कंडीशन. सेलिंग कॉस्ट इज समथिंग सेल करने के टाइम पे आएगी कॉस्ट, Hmm. सेलेबल कंडीशन तक नहीं है. सेलेबल कंडीशन तक कोई सेलिंग कॉस्ट इनकर नहीं हुई है, so that Right. won't be add in our cost of inventory. Okay. Right. What is net realizable value? It is an estimated selling price in an ordinary course of business. Less ordinary course of business मतलब normal course of business में अगर कह रहा है कि if a cost of selling this item is 100 rupees, Hmm. then estimated cost of completion, for example कुछ का same commission fee, कुछ taxes लग रहे हैं, documentation fee, that cost, advertisement expenses, that will reduce from our cost of inventory. That is our basically cost to sale. तो नेट रियलाइजेबल कितना हुआ? फेयर वैल्यू, सेलिंग प्राइस, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीशन. ओके. Yeah. Inventories has three models to record account inventory. You know three models. Which are they? Tell me. The model. Yeah, Acha, oh, this, yeah. FIFO, LIFO, and weighted average. correct. As per IAS 2, FIFO, weightage, and unit cost is allowed. LIFO is not allowed. If you remember LIFO, Hmm. LIFO, okay, is not. Why LIFO is not allowed? Any logic, you know? And how do we account for first in, first out? What is FIFO? What is average, weighted average cost? Any idea? First in, first out is like the first stock that we have incurred That in the that we first received, month. that is going Yeah, to be that out. is, That is going to be yeah, out. Okay. yeah. What is And LIFO? LIFO is last in, first out. So, like the recent stock that we have incurred, Mm-hmm. will sell those first. But this is the problem with the perishable goods, which ठीक है. has Good example. Perishable good. Yeah. a very less useful life. So maybe that can be one of the reason that we don't use that LIFO method. Okay. What is average? Average is the total number of inventory divided by total units. Perfect. Total cost divided by total units. That is our average. Okay. One more logic behind why LIFO is not allowed is that if you just said कि last in recent stock is going to be out first. इसका मतलब जो initial, for example, let's take a long term view. Hmm. 5 years down the line, ठीक है. 5 years, year one, year two, year three, year four, year five. At year 6 we sold few goods. इसका मतलब as per LIFO हम technically year 5 के goods sell कर रहे हैं. Hmm. करेक्ट. तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हम तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक Right. इज फ्रॉम ईयर 1 टू ईयर 4. करेक्ट. और Yes. उस टाइम पे Yeah. हमने पर यूनिट फॉर एग्जांपल 10 रुपए की थी, फिर नेक्स्ट ईयर 20 रुपए की हो गई, थर्ड ईयर 40 रुपीज हो गया, फिफ्थ ईयर 60 रुपीज हो गया, और लास्ट फिफ्थ ईयर 80 रुपीज का था और हमने 80 का ही बेचा एज पर लीफो. तो डोंट यू थिंक कि अगर हम कॉस्ट बेसिस पे रिकॉर्ड करें उसको, लोअर ऑफ कॉस्ट इन एनआरवी, कंसीडरिंग कि एनआरवी इज मोर देन द कॉस्ट,
So technically how are we recording? We are recording on cost. तो अगर हम Hmm. लोअर कॉस्ट पे रिकॉर्ड, डोंट यू थिंक कि हमारा वैल्यू आउटडेटेड हो गई है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम ईयर 6 पे वैल्यू कर रहे हैं इन्वेंट्री को ईयर 1 और ईयर 4 के कॉस्ट पे। Yes. करेक्ट? डोंट यू थिंक आवर इन्वेंट्री वुड बी अंडरस्टेटेड? Yes. Yes. So if your answer is yes, then understatement could how could affect the P&L? I just showed you now. How, if the inventory is understated, can impact the profit? Is profit is going to be increased or decreased, overstated or understated? If you understate our inventories, Profit will decrease because cost of sale will increase. perfect. इसका मतलब हमारा प्रॉफिट कम होगा। Yeah. प्रॉफिट के बेसिस पे भी कैलकुलेट और टैक्स। तो Hmm. प्रॉफिट कम है तो टैक्स भी कम है। Hmm. टैक्स सेविंग हो रही है। Hmm. इट्स अ मिस रिप्रेजेंटेशन। Right. So that's why LIFO is also not allowed, because you leave standard says that LIFO gives outdated value. करेक्ट? जो मार्केट में उसकी वैल्यू कॉस्ट है ही नहीं, हम उस पर शो करेंगे बुक्स में, विच इज वेरी रॉन्ग। और उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। एंड वी आर पेइंग लेस टैक्सेस। टैक्स सेविंग हो रहा है। करेक्ट? सो दिस लूपहोल हैज बीन रिमूव्ड, स्टैंडर्ड स्ट्रिक्टली सेज LIFO इज नॉट अलाउड। खत्म। Hmm. ओके? इफ यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व दिस। यू हैव 5 minutes to solve. Yes.
Okay. Just a second. Yeah, done. What is the answer for first one? Um, as per what I understood is that as this order is a profitable special order and the material costing for this processing is 12,000. So I think we should record at 12,000 because the order is profitable. It does Your voice is breaking. fallen to 10,000. Your voice is breaking. Hello, hello. Am I Yeah, audible? yeah. Now it's audible. Yeah. So as I was saying that I think that first for the first question answer the inventory should be valued at 12,000 because this order is profitable. This is one of the reason, and also the cost price that has fallen to 10,000, it does not gives meaning, or it does not relate to the this processing and assembling of order. Am I right? Correct. What is the second one? Second one is that the NRV which I founded is 18,000 minus the conversion extra cost, but it's the half extra cost. 18 minus 2100, which says 15,900. So it's Mm-hmm. less than the cost to complete. So lower of cost and NRV. So we should record at NRV 15,900. Perfect, perfect. Can you just explain the reason of first why, like exactly, am I right or not? Why we should record at 12,000 and not 10,000? See what the question is saying. Material costing 12,000, bought for processing and Hmm. assembling a profitable special order. Okay. Hmm. Since buying this item, the cost price has fallen to 10,000. Okay. After buying that product, for example, I purchase a raw material Hmm. to manufacture a finished good. That is basically my inventory. Okay. Right. My cost of the product which I purchase raw material has whose market value got down. But at the end मैं फिनिश गुड का फिनिश गुड मार्केट वैल्यू कंपेयर करूंगा ना बिकॉज दैट इज माय इन्वेंटरी. Right. करेक्ट. करेक्ट ना. फिनिश Hmm. गुड की कॉस्ट फिनिश गुड से कंपेयर करूंगा. Currently we are not comparing material cost with material. No, the material is simply to manufacture the process. Once assembly, the order the specialized order will compare with the order in the market, other orders. There is no item finished good given in this question. For example, let's take an example, material costing 12,000 baht for processing, and we'll convert this to a t-shirt. Okay. Okay. Now the t-shirt cost will be compare with the other t-shirt costs. For example, we'll determine that t-shirt cost with market value, not Right. the material used. Correct. Right. Right. That was question is since buying this item, the material which we buyed, the cost price has fallen to 10,000. Correct. Understood. Yeah. Understood. So I think yeah, we are done with IS2 as well. So yeah, that's it for the day. We have completed our agenda. We'll meet next week with new topic. IS12 taxation will start. Okay. So see you then. No problem. Goodbye. Thank you. Bye. Bye.